Professor Ashok Swain, thank you so much आपने में join किया. पहले तो यानी स्वीडन में क्या हो रहा है आजकल? ये कुरान बर्निंग का इंसिडेंट वहाँ पे बहुत रिकरिंग है. तो what is going on? आप उधर मौजूद हैं, हमें बताएं कि ये चीज इसकी स्टेट सैंक्शन है या यू नो कोर्ट ने apparently परमिशन दी इस चीज की, क्या हो क्या रहा है ये? देखिए स्वीडन में जो चल रहा है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स नाइस टू बी एंड देन टू बी ऑन योर शो. And obviously, let me tell my viewers that Professor Ashok Swain doesn't agree to just give interviews like that. He's quite a hard person to get a hold of, and I really appreciate कि ये आज हमारे शो के ऊपर मौजूद हैं. But continue, Professor Swain. थैंक यू. स्वीडन में देखिए, स्वीडन में जो चल रहा है वो नया नहीं है. ये तो आजकल जो हुआ है वो जैसे हुआ है पहले भी हो चुका है, एंड कुछ दिन से चल रहा है. जैसे जो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ कोई बनाता है प्रोफेट का कार्टून बनाता है, कोई आजकल कुछ कुरान बर्निंग में चले हुए हैं. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस, आई थिंक यू नीड टू रियलाइज कि स्वीडन में जो राइट विंग और फार राइट पार्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है. जब मैं आया, मैं 30-32 साल से यहाँ पे हूँ, तब कोई नाम निशान उनका नहीं था. आजकल 20-20% वोट है, और 20-20% वोट मींस दे आर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी. ये फार राइट की बात करें कि नाज़ी हैं, कौन है ये लोग? ये वर्चुअली नाजी बैकग्राउंड है पहले. तो जो स्टार्ट हुआ था 92 में, जब पहले थोड़ा स्टार्ट हुआ था, वो नाजी बैकग्राउंड है. दे ट्राइंग टू, बिकॉज ये स्वीडन है, दे कैन नॉट रियली एक्ट लाइक वेरी मच लाइक नाजी, बट देयर the neo-Nazi forces are major part of it. They try to have a makeover, or try to see that look, they are they try to act a bit that they're progress or the little modern party, but they are the same breed or same creed anyway. So और उनके साथ कोई गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहता था, अभी भी गवर्नमेंट में नहीं है, but on their support the present government is running. So we need to realize that. Oh, so these guys are in parliament, or your president government को support कर रहे हैं? Yes, of course. Without their support, the present government cannot be present government. It cannot. Wow. So, and they are the second largest party. The first largest party is opposition. Okay, so the second largest party is not in power, but is supporting a coalition which is led by a third largest party. So you can imagine the situation. Or another coalition it is supporting, but they are actually in a sense they're changing a number of things, like our discourses. कल मैं न्यूज़पेपर में आया था, मैं भी कि I criticized वो क्या डेवलपमेंट रिसर्च स्वीडन का वो immediately बंद कर दिया. Hundreds of researchers were applied for a fund which I used to even, जो वहाँ पे मैं चेयर था वो सिलेक्शन कमेटी में 7 साल. मुझे पता है कि कितना डेवलपमेंट, स्वीडन का डेवलपमेंट रिसर्च के लिए जो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं हम, तो वो पूरा बंद कर दिए. एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव अप्लाइड, ओवरनाइट इट गॉट क्लोज. सो ये ऐसे टाइप का डिसीजन हो रहा है, एंड दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज द ओवरऑल आइडिया. आई मीन आई एम द ओवरऑल पिक्चर हियर, बट सेइंग दैट the government is not interested in doing this. Government doesn't, because government is also interested that the Sweden joins NATO, और Sweden NATO join करने के लिए तुर्की का support is extremely important, और उनके लिए ये मुश्किल करता है. तो ये बात कि गवर्नमेंट नहीं चाहना चाहता है. और तुर्की ने तो इनको वो भी कंडेम भी किया. तुर्की ने कहा is calling it a heinous act. कि भाई ये is unacceptable. तुर्की अभी नहीं किया है, तुर्की पहले से ही करता है. तुर्की कोई पहला कुरान नहीं है जो यहाँ पे बर्न हुआ है बेसिकली. एग्जैक्टली. तो ये गवर्नमेंट की बात नहीं है कि आई मीन टू बी फेयर, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, it's not any political party other than the support sometimes, I mean or not open support, but there is sometimes also open support by this far right party. So that's the only thing which we do. Saying that, I think what happens, the Swedish rules are quite Sweden is the first country to provide a rule of freedom of speech and expression from 18th century, the first country in the world. And we are, but there are limits to that as well, right? अगर ये तोरा, अगर ये तालमुद या तोरा को जला रहे होते तो फिर इनके लिए तो डायरेक्टली जेल थी.
No, there are limits. I totally agree with that. That's not the thing. I'm just saying that the kind of things which they should put the limit. That's not. I'm not saying that they should not put the limit. The one thing which is that unless it is an official decision to take that is a security threat. Okay, so if it's a security threat, then they can take this decision. They have stopped also few times also before those kind of things. So it has to be a combined effort of the police forces, judiciary, that the police forces will report that it is a security threat, then the judiciary has to take a call because somebody has to go to then because the people can go to the court. So it's a bit more complicated than जो बाहर जो दिखता है कि लोग सोचते हैं कि ये the Sweden में जो the situation is that either Sweden's regime or the Swedish state is anti-Muslim or anti-core. Of course, there is but saying that there is I told you from the beginning there is a growing force in the political far right, of course. Far right going on. So it's a very complicated matter. क्योंकि इसका ताल्लुक भी refugees reaching Sweden है ना, यानी Syrians, Afghans, Pakistanis, whoever, Bengalis getting finally making their way to Sweden. Absolutely. तो ये Islamophobia उसी की तरफ से आ रहा है basically. Isn't that right? Absolutely. This is what this is what has been going on for some time. But there is also the kind of in Sweden there is a book which somebody wrote in 2000 almost 23 years back, saying that even in Sweden, means because they brought people from the different parts of the world, they kept it in a kind of particular areas in a certain cities, and they usually get social security, but they don't get possibility to integrate economically. Okay, so आपको job नहीं मिलेगा, आपको job market में आपका possibilities नहीं है, so then becomes it's a lot of mismanagement is there, a lot of ways that they have not been proper way, they have not been integrated into society. So integration problem is huge, but those are the problems we all know and we all accept. This is supposed nobody can deny. But what I'm saying, what is happening, this stray incident of this Quran burning or insulting to Prophet, is some antisocial elements are taking the benefit जो गवर्नमेंट जो उनका जो रूल्स रेगुलेशंस में जो ये है, जो whatever there are kind of things which they are taking the advantage of it.